Good morning, student. My name is Sohail Sham. I am Assistant Professor in Management Studies. Welcome to my second lecture from the subject Management Process and Organizational Behavior. Today we will be discussing the nature and characteristics of management and the importance of management which are given by Peter E. Drucker. Let's start with the nature and characteristics of management. Management is a goal-oriented activity. Management is said to be a goal-oriented activity as it is basically performed for achievement of organizational goals. It means there is no need of management if there are no predetermined goals in the organization. Right? इसमें बता रहा है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो विजन्स हैं कि क्या करना है, व्हाट वर्क हैज़ टू बी परफॉर्म, ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ एट मे बी एट सुपीरियर लेवल और सबॉर्डिनेटिव लेवल उन लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन. तो द गोल्स मस्ट बी वेरी क्लियर. So it is said to be management said to be goal oriented activity. Next, continuous process. Management is basically a ongoing process that has to be performed in day to day activities in the organization, right? So ये never ending and continuous process है management. Next, coordinative force. Management is basically a coordinative force, or it can also be said as integration of human and non-human resources. Human and non-human resources can be classified into 5 M's. 5 M's of management. They are manpower, material, machinery, method, and money. So it is a coordinative force by which the manager will manage the things by humans and non-human resources. Next, intangible force. Management is said to be intangible force, or we can say it as unseen force. We cannot see management, but we can feel it. We can feel the efficiency of management, right? We can see the progress of the organization, which is totally depend upon the effective management, right? So management is unseen force basically. Next, it is group effort. Management is an activity which is performed by various employees in the organization for achievement of a common objective, right? All are working for a common objective. That's why it is said to be a group effort. Management is dynamic discipline. Management is said to be a dynamic discipline as it is multidisciplinary in nature. It contains principles drawn from many social sciences like anthropology, psychology, and sociology. Right. Other than this, अगर हम discipline की बात करें तो there are certain rules and regulations that has to be followed by every employee working at every department at every level in the organization for their survival in the organization and for achievement of organizational goals. They are bound to follow certain rules and regulations of the organization which is imposed by the organization towards them. So it is said to be a dynamic discipline. Balance, effectiveness and efficiency. Right. What is effectiveness and efficiency? मतलब सही काम करना और टाइम से पहले काम को कर दिखाना, राइट? तो इफेक्टिवनेस मतलब व्हाट? नोइंग द जॉब, द क्लियर विजन अबाउट व्हाट टू डू, एंड एफिशिएंसी इज व्हाट? इन मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट यू आर परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज, दैट इज एफिशिएंसी. तो मैनेजमेंट इज said to be, management make a balance between effectiveness and efficiency. How? The time management, the motion management, all this can be happen if there is proper management in the organization. Next, accomplish result through the cooperation of others. Management is basically performing work with and through others. For this we need the cooperation of the employees, the cooperation of the manpower working for the organization, right?
तो it is basically depends upon the cooperation and the group effort of the organization for achievement of organizational goals and objectives. Next, science as well as art. मैनेजमेंट को हमने साइंस इसलिए बोला है बिकॉज इन डे टू डे एक्टिविटीज द मैनेजर विल परफॉर्म सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स विद द ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेस एज वेल, राइट. और आर्ट्स इसलिए बोला है क्योंकि इट डिपेंड्स, आई मीन इट इज़ रिलेटेड टू नॉलेज एंड skills of the manager and the ability of the manager to take the work from others and perform his duties with others for efficiently and effectively for achievement of organizational goals and wants. And the last, it is said to be pervasive, which is universally acceptable. It means at every level, at every department, at every system or subsystem, management is universally acceptable, right. So it is said to be all pervasive. Hope you have understood all these nature and characteristics of management. आगे बढ़ते हैं. Importance of management, which are given by Peter E. Drucker. First, accomplishment of goals. Management is basically performed for accomplishment of goals and objectives in the organization, right. The objective of organization is to earn profit. For earning profit, we need to fulfill the goals. Goals are many. Goals are departmental goals. But objective is single, that is earning of profit. For achievement of objective, we need to fulfill the goals. ऐसे पॉसिबल नहीं है कि हमारे गोल्स फुलफिल नहीं हो रहे, अकॉम्प्लिश नहीं हो रहे गोल्स और हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें, राइट. तो वी फर्स्ट नीड टू accomplish our goals for achievement of objectives. तो मैनेजमेंट का पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ. नेक्स्ट, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट. तो इसमें क्या है कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी द रिसोर्सेज आर द मैन पावर, एंड मैन पावर इज सेड टू बी द ह्यूमन रिसोर्स एंड द नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज. इसमें 5 M's ऑफ मैनेजमेंट आ जाएंगे. दैट दे आर मैन पावर, मशीनरी, मेथड, मटेरियल एंड मनी, राइट. दे ऑल आर अनऑर्गेनाइज रिसोर्सेज जिसको एक मैनेजर मेक द यूज ऑफ दिस ऑल अनऑर्गेनाइज रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर वे फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड वांट, राइट. तो बेसिकली ये जो अनऑर्गेनाइज रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करा जाता है, थ्रू वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में दे आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट. With all these functions, we will manage the things. We will manage the factors of production. Factors of production are said to be 5 M's of management. So basically, management is effective utilization of resources. If the manager is managing the things efficiently in the organization, it means the manager is utilizing the resources effectively and efficiently in the organization. Next, proper vision and forecasting. मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव, क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर प्रॉपर मैनेजमेंट हम करेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का विजन हमें पता होगा कि व्हाट आर द वेरियस गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. तो उसके हिसाब से द मैनेजर विल फोरकास्ट इज रिलेटेड टू मेकिंग प्लान्स फॉर फ्यूचर, राइट. तो बेसिक विजन एंड फोरकास्टिंग हो पाएगा अगर मैनेजमेंट प्रॉपर है तो. Next, harmony in work. What is harmony? Right, in an organization, various employees come from different backgrounds. They have different attitude, they have different working style. But it is the responsibility and duty of the manager to make a coordination between each and every employee so that they can work in a harmonious way. Right, they can जो ये मैनेजर है, मैनेजर का काम है कि हर एम्प्लॉयज़ को आपस में कोऑर्डिनेट करवाना और अच्छे से उनसे काम ले पाना,
right? Management is art of getting things done through others, right? Working with others and working for others, right? तो इट इज़ सेड टू बी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्या है, अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में हारमोनी अमंग द एम्प्लॉयज हो पाएगी. नेक्स्ट, sound organization. When I discuss about the importance of sound organization, it is related to proper environment and cooperation of the employees, right? Proper environment, in every organization, every employee needs a proper environment, working environment in the organization. It means available of all the necessities, the basic necessities, राइट, लाइक लाइटिंग प्रॉपर हो, राइट, और जो मतलब उनका वर्किंग कंडीशंस के लिए, क्लाइमेटिकल चेंज के लिए जो एसी हो गया, कुछ और चीज़ें हो गई जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए. और इससे हट के जो रॉ मटेरियल, प्रोवाइडिंग ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोवाइडिंग ऑफ मशीनरीज, राइट, तो इट विल बेसिकली मेक ए, आई मीन द साउंड ऑर्गेनाइजेशन if we are getting all the things in an efficient manner. Next, it helps the employees in achieving their personal objective as well. मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रॉपरली मैनेजर मैनेज कर रहा है चीज़ें तो फिर एक एम्प्लॉय के जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अचीव हो पाते हैं. वाई? बिकॉज the employee will get, if there is proper management in the organization, the employee will get the satisfaction about the personal satisfaction, about the appraisal, about the incentive, about the fair remuneration, about the job satisfaction, incentives, all these appraisals मिलते हैं. और इससे हट के क्या होगा, एम्प्लॉयज़ का पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव होगा, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स तो अचीव हो ही रहा है, ऑब्वियसली वो होगा क्योंकि दे आर वर्किंग, ऑल द एम्प्लॉयज आर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? दे आर गेटिंग द सैलरीज और वेजेस फॉर दैट. लेकिन इससे हटके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉयज़ के होते हैं वो भी अच्छे से अचीव हो पाते हैं अगर प्रॉपर मैनेजमेंट रहे तो. दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट एंड द लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड नेशन, राइट? Now, what is the objective of the organization? Objective is earning profit by providing right quality of product and services in the market. And if the organizing is providing right quality of services in the market, right quality of product in the market, and developing the technology, then the organization is basically serving for the society. And अगर सोसाइटी को हम राइट चीज़, राइट क्वालिटी, राइट टाइम पे अगर हम सर्व कर रहे हैं बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी होगा, राइट? और जब डेवलप होगी एक सोसाइटी तो फिर एक नेशन का भी डेवलपमेंट होगा, उस पर जीडीपी वगैरह पे इफेक्ट पड़ेगा. तो इट इज़ ऑल इंटर रिलेटेड. So these all are the 7 importance of management given by Peter A. Drucker. Hope you people have understood all this topic. Thank you for watching my video, and if you like my video, kindly like it, share it, and comment it. Thank you so much. Have a nice day.